Let's get you more on that as the Prime Minister is concerned, who has embarked on this pivotal Mauritius visit as the key agenda of this two-day visit, as the Prime Minister, who is participating as the chief guest in the National Day celebrations while strengthening bilateral ties through mutual and multiple agreements as well. And this visit also emphasizes India's commitment to enhance cooperation in the Indian Ocean region. We have Bhavtosh Pidas. आने का मौका मिला और अपने प्राइम मिनिस्टर को एकदम पास से देखने का मौका मिला। आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ 15 ईयर्स से रह रही हूँ। हाँ, माय हस्बैंड वर्किंग। Okay. Your husband is working. Yes. Sir. Hello. Good morning. My name is Nishant Sekhar. I am working in MTML, which is subsidiary of MTNL Delhi. Yes. It's a Government of India Enterprises. So we are feeling proud to meet our Honorable Mr. Narendra Modi. Because he is a global leader. He is not a leader of India, he is a global leader. The way he is doing things globally, it's a very proud for us. So, thank you. That have been coming in. Let's also play out and get your reactions on part of the people there who have welcomed the Prime Minister there of this visit that emphasize a lot of importance there, as the Prime Minister will be attending the National Day celebrations as the chief guest. करने की तैयारी है मॉरिशस की 10 साल पहले आए थे जी मैं 10 साल पहले भी मुझे मिलने का मौका मिला था जब महात्मा गांधी सेंटर में वो आए थे और मैं अपने बच्चों को भी काफ़ी प्रेरित करता हूँ कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं इस उम्र में भी देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं तो उनसे इन लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से वो स्वच्छ भारत अभियान और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं देश में और ग्लोबली भी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए काफ़ी प्राउड का विषय है और हम लोग को काफ़ी खुशी हो रही है। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप जो है सो आप उनसे प्रेरणा लो और किस तरह से वो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन की बात करते हैं और आप लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और आप लोगों को पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो अभी तो मैं यही बच्चों को बोलता हूँ कि आज इन लोगों में स्पेशली लाया हूँ कि उनसे मिले और सीखे उनसे। All right, Srinjoy is connected with us. Srinjoy, good morning. The importance that has now been given as far as the National Day celebrations, of course, the participation of the Prime Minister will also be there, but there are also multiple engagements lined up between the two countries. Yes, security is a big issue because Mauritius is a small country with a huge area there, ocean area, and there are issues that have to be worried about. Because what will make Mauritius secure will also make India secure. There is piracy in the Indian Ocean. There is drug running in the Indian Ocean. There are other kinds of trafficking in the Indian Ocean. There is also the threat of adversarial countries. Now that too has to be looked at. So India in the past has given warships to Mauritius. India is also looking at giving more warships to Mauritius to ensure that Mauritius's security is looked after. And there will be a large armed forces input as far as these celebrations are concerned. The Akash Ganga unit of the Air Force will be involved. The Army will be part of the March Past. There will be a naval ship at Port Louis. So all of these things show closer ties between these two countries, closer economic ties, closer military ties, closer socio-cultural ties as well. And let's also talk about, Srinjoy, as far as India and Mauritius having uniquely close cooperation when it comes to maritime security. I believe live reactions are coming in. Let's cross live. That I've heard. And I made this when I knew he's coming, so I was thinking about making this. So we made some more flag of India, Mauritius, and we welcome him to Mauritius. So it's my first time I'll meet him and see him in real life, so I'm very excited. So when he'll come up to you and he'll meet you, he'll see this, what are you going to say then? I don't know, I will be sure. Welcome to Mauritius. Yeah. I love you. What's your name? क्या नाम है आपका? My name is Sarthak Joshi.
साथी जी ये बताएं प्रधान आप इतने सुबह सुबह आ गए वेलकम करने के लिए तो आज जब प्रधानमंत्री आएंगे आप क्या कहेंगे क्या बोलेंगे उन्हें? पता नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मीट कर रहा हूँ उनको। हाँ थैंक यू। हेलो, यस। आपका नाम है? अनन्या भट्ट। अनन्या जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे मॉरिशस की विजिट को आप कैसे देखते हैं क्योंकि 10 साल पहले आए थे Yes. आ रहे हैं कैसे स्वागत करने की आप लोगों की तैयारी है? We are very excited. We'll cheer him up, and of course he'll be happy to see us that हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। वही क्वेश्चन होगा कि अगर आपके सामने आएंगे क्या कहेंगी उन्हें? Welcome to Mauritius. Thank you. Students there and the Indian diaspora was given a grand and a warm reception to Prime Minister Narendra Modi. राज है अमृता जी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? एक डायस्पोरा को तो वो कहते भी हैं कि एम्बेसडर्स हैं आप लोग तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं? मैं उनको ऐसे देखती हूँ जैसे मुझे लगता है उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखना चाहिए। देश के सभी बच्चे और बड़े सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। वो इस उम्र में भी अपने देश के लिए कितना कर रहे हैं, प्राउड फील हो रहा है देख के उनके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मैं उनको पास से देखने का मौका मिल रहा है और मैं उन्हें पास से देखूंगी। और पास से तो आप देख पाएंगे अब शायद जब इंटरेक्ट करेंगी तो आप बहुत ज़्यादा पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। मैं बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। हमारे पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हम सब लोग बहुत खुश हैं। जो जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो भी काफ़ी खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री से। गर्व की बात है हमारे लिए। So reactions coming in of the Indian diaspora, warm and a rousing reception that has been given to Prime Minister Narendra Modi there. And Shinjo, as we were discussing the multiple engagements, because India and Mauritius having close cooperation in maritime security, there is also a development partnership and there is also capacity building and close people-to-people ties. Sagar, that is what it stands for when it comes to security and growth for all in the region, especially in the Indian Ocean region, with India raising as far as it's a mutual concern and cooperation with the other smaller nations. Yes, undoubtedly, India has given 2 Coast Guard vessels to Mauritius with good reason, because this is an ocean where there has been, of all things, after all these years, piracy. Now, the one way to fight piracy is to have a proper security force, which is why Mauritius now has 2 Coast Guard ships that India once had. Also, fast attack craft. These are things that India has given Mauritius, and there is talk of an OPV, a larger warship going to Mauritius from India. Now, this will help Mauritius to secure its area, its EEZ, because that's quite large. And if there is drug trafficking involved, piracy involved, the threat from other countries involved, then India has to stand by and India has to help Mauritius. So that's a very major aspect. Of course, economic cooperation is extremely important. Also the fact that capacity building of ports, building of roads, all of that has to be done. And India has very happily agreed to work with Mauritius. Well, the Prime Minister himself noting that significant strides that has been made in the last 10 years between the two sides with people-centric initiatives as well. Thank you very much, Rinder, for joining us with the details there. So the Prime Minister